नमस्कार दोस्तों। आज हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया आईपीओ एनालिसिस एमटीआर का लेके और बात करते हैं कि एमटीआर है क्या। देखिए साहब, जीएसएलवी लॉन्च होती है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनते हैं, न्यूक्लियर पावर का काम होता है। तो ये कंपनी इन सब के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाती हैं और इसके लिए इक्विपमेंट मशीन बनाती हैं। अच्छा बड़ा नाम है इनका, उस फील्ड में इस्टेब्लिश्ड है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इस सेक्टर की, वो इनकी कस्टमर हैं। सो हम शुरू करते हैं उसी से, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए अपनी पीपीटी शेयर करता हूं, सो दैट यू आल्सो कैन एनालाइज based on that what I have done it, and you can also see whether the comments of mine are good or not. So that is what we can see. So MTAR टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके आईपीओ डेट्स हैं 3 मार्च से लेके 5 मार्च, यानी इट विल बी 3rd, 4th and 5th, 3 days it will be open. Face value of the share is 10 rupees per equity share. IPO जो है इसकी प्राइस 574 and 575, so market lot becomes 26 shares. इशू साइज जो है वो 10,372,419 shares, which means 1,03,72,000 shares are being issued by the government, by the company, out of which fresh issue है 21,48,000 का एंड 82,24,000 का ऑफर फॉर सेल है। मैं इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, ऑफर फॉर सेल मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर्स आर बीइंग सोल्ड और फ्रेश इशू इज द कंपनीज capital is being increasing by that amount. The allotment of will be decided on the 10th of March. Refunds will be initiated on 12th March, and the credit to shares of demand account will be 15th of March. The share will be this issue will be listed on the 16th of March. So which means almost you are having a 15 days schedule. अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग है 62.24%, और आफ्टर द इशू इट विल बी 50.25%. नाउ दिस कंपनी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो एक 1999 इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है विच इज प्रिसिशन मशीन्स बनाती है, स्पेशलाइज फैब्रिकेशन है, टेस्टिंग है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसिंग है, और इसके साथ ये जो क्रिटिकल असेंबलीज हैं, जो हमारे जीएसएलवीज मार्क 3 बेस शोर्ड असेंबलीज, एयर फ्रेम्स फॉर अग्नि एंड एलसीए एक्सेट्रा, सो जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में जनरली हम फॉरेन की कंपनियों की बात करते हैं, वो इसकी प्रोडक्ट्स हैं। ये इसीलिए ये हाई मार्जिन ले सकते हैं, अपना प्रीमियम प्राइसिंग करके रखते हैं। इनकी जो कंपनियां हैं जिनको सप्लाई करते हैं वो इंडियन न्यूक्लियर डिफेंस स्पेस सेक्टर में काम करती है, आईएसआर से एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीआरडीओ, ब्लूम, राफेल, एल्बेट, ये ऐसे इनके क्लाइंट हैं जिनका अपना खुद का बड़ा नाम है। तो आप सोच लीजिए कि कंपनी जो टेक्नोलॉजी बनाती है वो कितनी अच्छी है। इनकी 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं हैदराबाद और तेलंगाना, दैट अंडरटेक प्रिसिजन मशीनरी, असेंबलिंग एक्सेट्रा। सो साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, और इस इशू का जो इनका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली दे वांट टू रीपे द लोन जो इन्होंने पहले ले रखा है, आइदर इन फुल और पार्ट, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड बाकी कॉर्पोरेट पर्पसेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं ईआईसी, इकोनॉमी एनालिसिस, फंडामेंटल एंड एनालिसिस की बात करते हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पुश के बाद कि इस तरह की कंपनियां और आएँ और जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी तरफ आगे बढ़ाएं कदम। तो ऐसी कंपनियां उस दिशा में बहुत अच्छा कदम बढ़ा रही हैं और काम कर रही हैं, तो इनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ये जो इंडस्ट्री है इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, हाँ अनलिस्टेड कुछ है इसके साथ, और इसीलिए इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो प्रभत श्रीनिवास रेड्डी, 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास बिजनेस में। लीलावती जी हैं, शालिनी, Anita Reddy, and GK Reddy, Anshuman Reddy, etc. So you can see that their names are mentioned here for you. So I already said that Indian economy is growing. Industry is having its own niche, its segment. It will have a demand in future. So MTAR can have a very good growth in this particular segment. Although they have a huge competition, not from domestic, but foreign companies also. COVID-19, unlike other companies, this has also seen the shutdowns. प्रोडक्ट में इनकी डिमांड डिक्रीज हुई, उस पीरियड में सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन थे इनके लिए भी, इनके कस्टमर्स के लिए भी।
क्योंकि गवर्नमेंट के ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस थी, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली, कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिवली इफेक्ट हुई इनके। जो कंपनी के प्रोजेक्ट से दे हैव प्लान पहले से, उनको आगे बढ़ाना पड़ा, सो दे वर डिलेड एंड दे वर नॉट एबल टू कलेक्ट देयर फुल और पार्शियल पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर जिनसे पैसा आई है उनका खुद लिक्विडिटी खराब हो गई, तो हाउ दे कैन गेट द फंड फ्रॉम दैट। अब आते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, सो थ्रेट्स यानी अपना स्वाट एनालिसिस पे। सो इस कंपनी का सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, वो पहली स्ट्रेंथ है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस आल्सो। 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैदराबाद एंड तेलंगाना में। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है। precision engineering expertise with complex product manufacturing capabilities। तो एक थ्रेट यानी सब्स्टिट्यूट नहीं आता है इस ऐसी कंपनियों का बहुत जल्दी। इट इज नॉट इजी टू एंटर इन दिस सेगमेंट। वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सो लीडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स लाइक इसरो एटसेट्रा। DRDO, modern technology at state of art manufacturing facilities, strong and diversified supplier base है for the sourcing and raw material, strong financial track record of the growth in financial performance. Now, what are the risks? Out of the top 39 customers, it is top 3 customer accounted for more than 80% of its revenues as on December 31st, 2020. So it means loss of either of them, यानी तीन में से कोई भी एक इसका साथ छोड़ जाएगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हैविली इफेक्ट होगा। Liberalization of the defense sector has paved the way for private and foreign players to participate in defense contract. So company will have more problem from that segment. And competition will come, so revenue will go down. MTAR Technology involved in manufacturing mission critical component with extremely low tolerance. So adherence to quality standard is very critical. Deviation will be impacting its image. However, till now they have maintained a very good record on that. Dividend, company has paid a dividend for the last 3 fiscals, including ongoing one. For FY19, they paid 30%, 20, 50%, 21, 30%. Till RHP has been filed by then. The company is confident of maintaining a prudent dividend policy going forward. So it means they will be giving the dividend to their shareholders. So from that point of view, it is good for the company. I already said that they have got a huge competition in this segment because there are some companies are coming. New may not come, but existing are having. So I'm not going in much detail of that. In nuclear sector, Larsen and Toubro, heavy engineering जो है वो इस पे इनका competitor है Godrej and Voice manufacturing company. Space and defense में Larsen and Toubro, Godrej and Voice manufacturing, Hindustan Aeronautics, Walachand Nagar Industries जो पहले से listed company है, and L&T, Godrej, they all. So उनका इनके ऊपर काफी ज्यादा इनसे competition है, जो इनके जो ability है to fulfill the contractual obligations उसके ऊपर भी असर डाल सकते हैं. MTAR Technology is the sole supplier from the Indian market to want this energy as a fiscal 2020. So that is what they have. And now I'm coming on the financial, the strength है company की हो सकती है. So if you see the revenues of this company last काफी दिनों से, the company is able to this revenue in 3177 and FY18 it was the 160. So this is only for 9 months till now. So you can see this. So there are growth rate is showing here. This column is very impressive revenue from operations, and this is growth is showing this year also. And the profit after tax is 28 as of now, even after COVID. EBITDA is 53. Total assets 381.91. Cash at bank 21. Cash generated from the operation 2.44 a week's ka time hai, and 63 here. EBITDA margins are high 30.32 as compared to FY 2020 which was 29, and in FY 2019 it was 30 and FY 18 20. So they are increasing in that direction. Net margin 15.77, so which were again is a high on that side. So if you talk about the MTAR टेक्नोलॉजीज की अगर मैं समरी आपको बताना चाहूँ तो एक ऐसी कंपनी है जो नीचे प्ले में बिलीव करती है, मैन्युफैक्चरर हैं कंपनी एंड डज क्रिटिकल असेंबलीज फॉर गिव हाई मार्जिन्स टू देम. 7 प्लांट्स हैं इनके, एंड FY 19-20 में रोबस्ट ग्रोथ इट हैज गिवन.
in spite of the fact that there was a COVID. सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट जो इनके साथ है, इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में 18,51,851 इक्विटी शेयर्स प्लेस किए हैं to the different anchor investors at 540 per share. The issue worth considering for long time, लेकिन aggressive pricing की गई है, that is there. So business strategies क्या क्या है इनकी कंपनी की? Product portfolio इनके पास अच्छा है, which they want to diversify and profitably want to complete it. So first column I will say they want to diversify. Second, indigenization of the government India and the defense sector, जो कि हमारे गवर्नमेंट का पार्ट है, उनकी बहुत अच्छी और ये उसका फायदा ले सकते हैं, स्पेशली इन द इंडियन स्पेस सेक्टर में. Deepening the strengthening relationship with the existing customer as well as catering to the new customers. This column they need to focus a lot because as we discussed, more than 80% revenue we are coming from three, यानी DRDO, ISRO and Nuclear Power Corporation of India. उनसे इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा, बाकी से उतना नहीं आता. So they have to increase international presence also because international companies will come to India, hence they have to go to that side to maintain the revenue, manufacturing capacity to increase the market share, and efficiencies also they need to increase it further. And क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस है, वो बेसिकली बात करता है कि बहुत ज़्यादा आपका एफिशिएंसी रहनी चाहिए. अब अगर मैं इनका ब्रेकअप कर लूँ रेवेन्यू वाइज, सबसे पहले तो मैं इनके ऑर्डर बुक की ब्रेकअप आपको दिखाता हूँ कि इन विच डायरेक्शन दिस कंपनी इज वर्किंग. देखिए साहब, इनके तीन बिजनेस है मेनली, क्लीन एनर्जी का, देन स्पेस एंड देन न्यूक्लियर. सो क्लीन एनर्जी से का बिजनेस जो है इनका 24% है लास्ट ईयर का. स्पेस एंड डिफेंस से इनके पास 48% है बिजनेस और न्यूक्लियर से 28% है. क्लीन एनर्जी FY20 में इनके पास 65% रेवेन्यू यहाँ से आया इनका, और FY21 की बात करूँ तो 49% है 9 मंथ्स में. एंड स्पेस एंड डिफेंस में 18% था लास्ट ईयर, दिस टाइम इट इज 21%, so it is increased here. Nuclear has increased again 27 because government is focusing on the nuclear energy, and others बाकी consultancy वगैरह से इनका 3% आ रहा है commission. So if you see now, come on the comparison with the others companies. So Timken India, SKF, Sache, MTAR Technologies here. This is the company अपने जिसके हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी है. इनकी जो ऑपरेटिंग इनकम की बात करो, that is 214 as compared, which is not very good. L&T and Godrej Voice and Alpha Designs, Shalfa and SKF India, Timken, they all are at highly placed but big companies. But इनका अपना segment है, they are doing good in that case. So profit after tax is 30 as compared to others. So L&T, Godrej, Timken and the SKF are the main competitor of this company. And other than this, others foreign companies are also in this field. So MTR has no listed peer because the business model does not match with that. However, the competitor in nuclear sector are Larsen and Toubro, Heavy Engineering, Godrej Voice, Hindustan Aeronautics, and the Vulcan Industries. Company cannot be compared on an apple-to-apple basis as the business offering are different. However, reference valuation can be derived as these companies operate in similar sectors. So based on that, I will say that this IPO appears to be aggressively priced or overvalued to some extent. But as you are seeing that the market is going up, boom, 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 nifty. So, and this segment where they're working and they can drive more and more revenue based on that. So profit margins are high. So I feel that this is a good company where you can put in money, where the investor can put their money in. So MTR features precision engineering expertise, complex product. Hence, there exists a sizable opportunity for arms export from India, especially in low-tech weapons. The target market can be Africa and Middle East. It is also worthy to note that the budgeted defense expenditure is expected to witness constant FY21 largely due to COVID in the worldwide, not only in India. MTR has reasonable financial performance, strong margins for the last two physicals and the 9 months.
during this year. So I will feel that the company, the investors may put the money in. And finally, my recommendation for this IPO is it is highly priced but good for long term. And seeing the market condition, etc., I feel that around listing gain 70 to 90% of the listing डेट पे आपको मिल सकता है इसका प्राइस का लगभग 400 से आई फील 350 टू एक इन रेंज जो प्रॉफिट आपको आएगा वो 350 से 450 के रेंज में आपको प्रॉफिट मिल सकता है लिस्टिंग. सो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एंड माय डिस्क्लेमर इज दैट आप सारे लोगों को कोई पैसा आपका है भाइयों तो पैसा लगाने से पहले एनालाइज करिए ऑल फैक्टर्स. मैं इसीलिए आपको पीपीटी देता हूँ सो दैट यू पीपल कैन एनालाइज योरसेल्फ आल्सो. And this is more of academic presentation of mine, does not have any commercial links on that, so please do that. And this so please analyze. Thank you. And I always believe that knowledge must be created, so you people must start analyzing and participate in, like, subscribe this your channel of Fingrowth Mantra. So subscribe करते रहिए इसको, अपने दोस्तों को बता रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए. थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए. अगला वीडियो एकेडमिक्स पे होगा जो आपके लिए कल मैं पोस्ट करूंगा. थैंक यू.